to Unacademy, and this is our channel Unacademy Cat. Very good morning to all the learners of Unacademy and welcome you all to a brand new session of the Hindu Editorial Analysis Guide. रोज की तरह हम लोग इस सेशन में भी एक एडिटोरियल को एनालाइज करने वाले हैं एंड इट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. हमने इसके बारे में पहले बात की हुई है. हाउएवर देयर इज अ डेवलपमेंट इन दिस इशू, तो आज इस पर्टिकुलर एडिटोरियल सेशन में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. ओके गाइस, सो ऑल्सो मैंने कुछ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए यहाँ पर फ्रेम किए हैं. So let's start with the session, guys, without wasting any time. So all the people who are going to be here for the very first time, I am Advocate Rushikesh Kate, and I will be guiding you for your GK and current affairs section for various entrance exam that goes for ZAT, IFT, CMAT, and particularly TISS. Hi Praveen, good morning. Welcome to this session. So all the people who are going, so this is the channel where I will be coming live every day, twice in a day, guys. Hi Gunjan, good morning to you also and welcome to the session. One is 11 AM session guys, जहाँ पर हम लोग editorial analysis का class करेंगे, and one is 7 PM where we will be covering the fundamental rights session today. आज 7 बजे हम लोग fundamental rights FR का जो टॉपिक है गाइज उसको कवर करने वाले हैं 7 बजे के सेशन में. Hi शुभम, good morning, welcome to the class. So do not miss out on this session also guys, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सेशन है. आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी के कोर्स से. ओके, सो गाइज अनअकैडमी का आइकॉनिक एंड प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव क्लासेस, वीकली सेशंस, वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं. वेयर एज इन आइकॉनिक आपको प्लस के तो सारे बेनिफिट्स मिलते ही है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो गेट पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, वन ऑन वन लाइव मेंटरिंग, personalized test analysis and expert guidelines. Okay, so go for the subscription guys. The 1 year subscription plan for iconic goes for 39,500 and the 2 years goes for 59,999 rupees. और वैसे ही guys plus के भी बहुत सारे subscriptions है. You can go according to your preference. We have 6 months, 12 months, 18 months, 24 months. Okay, so whichever subscription is suitable for you, आप उस subscription को ले सकते हैं plus में भी. And guys, do not forget to use this code RUSHI. इससे आपको 10% एक्स्ट्रा फिर एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सारे सब्सक्रिप्शन पर. हाय सूरज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. डूइंग बेटर गुंजन, डूइंग एब्सोल्युटली बेटर. आई रेज्यूम्ड माय क्लासेस यस्टरडे ओनली. कल ही मैंने क्लास अपना रेज्यूम किया है. ऑल्सो गाइज नए बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, सो यू नो द एडुकेटर कोड ऑलरेडी. जल्दी से जल्दी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस को सब्सक्राइब करो, एनरोल टू दिस क्लासेस एंड enhance your learning only with Unacademy. Hi Vandana, good morning to you and welcome to this session. Okay guys, तो चलो शुरू करते हैं. Also guys, before we start with the session, let me remind you that weekly GK test होने वाला है आज Unacademy के learning application पर and it will be at 12:30. Okay, 12:30 बजे weekly GK का टेस्ट होगा हमारा और वो 12:30 बजे को होगा. ओके, लास्ट वीक में हमने जितने भी अपडेट्स को कवर किया है सारे के सारे अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे. हाय प्रेरणा, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो एंड वेलकम टू दिस सेशन. ओके गाइज, चलो नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन. इस सेशन को शुरू करते हैं. द टाइटल ऑफ दिस एडिटोरियल सेज रिटर्न ऑफ द मुल्लाज. ओके, रिटर्न ऑफ द मुल्लाज. नाउ मुल्लाज इज पर्टिकुलरली अ टाइटल गाइज. ओके, इस्लामिक रिलीजन में मुल्ला जो है एक पर्सन को टाइटल दिया जाता है. सो रिटर्न ऑफ द मुल्लाज मतलब पहले भी इनका एक रिजाइम हुआ करता था. कहां पर हुआ करता था, किस लिए हुआ करता था, टाइटल से क्लियर नहीं होता है. ओके, वी स्टिल डोंट नो व्हाट प्लेस इट इज टॉकिंग अबाउट और व्हाट रिजाइम इट इज टॉकिंग अबाउट. इट इज ओनली टेलिंग अस दैट सिंपली देयर इज अ रिटर्न ऑफ द मुल्लाज. मतलब क्या है, अगर हम जनरली इंटरप्रेट करते हैं, पहले भी इनका किसी एक टाइम पर रीन हुआ करता था एंड नाउ दे हैव रिटर्न टू पावर. ओके, वो पावर में अब वापस आ चुके हैं. सो दिस इज द जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द टाइटल. ओके, टाइटल का ये जनरल इंटरप्रिटेशन है. अब हेडलाइन देखते हैं. व्हाट इज द हेडलाइन? तालिबान. ओके, तालिबान. नाउ इट मेक्स इट एब्सोल्युटली क्लियर. हेडलाइन से समझ में आता है कि कहाँ के मुल्लाज के बारे में बात हो रही है. द मुल्लाज विच आर इन तालिबान. ओके, तालिबान के जो मुल्लाज है उनके बारे में बात हो रही है. तो ऑब्वियसली वी नो कि तालिबान was ruling Afghanistan in the 1990s till 2001. Okay, and
ultimately they lost the power when US invaded Afghanistan in the year 2001. आज देखो what is the coincidence guys, today is 9/11, 11 September, exactly the day which America was attacked, okay, terrorist attack हुआ था, where they destroyed the World Trade Center, okay. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उन्होंने पूरी तरह से प्लेन घुसाकर डिस्ट्रॉय कर दिया था. द दैट्स वेयर द अमेरिकन पॉलिसीज टू द मिडिल ईस्ट एक्चुअली अल्टर्ड, और फिर उन्होंने अपना प्रेजेंस ज्यादा तौर पर मार्क किया इन द मिडिल ईस्ट, स्पेशली द अफगानिस्तान, बिकॉज दे वर ऑन अ विच हंट फॉर ओसामा बिन लादेन. एंड इट वाज रूमर्ड, या फिर इंटेलिजेंस यही कहता है कि ओसामा बिन लादेन actually was hiding out in the mountains of Afghanistan. Okay, so Taliban have sent a clear message. Now this particularly यहाँ पर clearly हमें समझ में आता है कि Taliban have sent a clear message that they care little about what the world thinks of them. Okay, so जब 15th अगस्त को, ओके, 15th अगस्त को अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने व्हेन दे एंटर्ड काबुल एंड स्टार्टेड टू कैप्चर द प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान, ओके, सब लोगों का ये स्पेक्यूलेशन था, एवरीबडी वाज स्पेक्यूलेटिंग कि दिस टाइम प्रोबेबली द तालिबान रिजाइम इज गोइंग टू बी डिफरेंट. वो खुद ही बोल रहे थे कि इस बार हमारा रिजाइम जो है वो अलग होगा, बिकॉज दे वांटेड द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज देम, रियलाइज देम. उनके रूल को वो उनके रिजाइम को रिकॉग्निशन चाहिए था. सो दे वर इन द बिगिनिंग दे हैड द पॉलिसीज कि हम विमेन को सारे राइट्स गारंटीड करेंगे, बट विद इन द एम्बिट ऑफ द शरीयत लॉ. फिर धीरे धीरे वो डेवलपमेंट होते गया, एंड नाउ दे थिंक वेरी लिटिल, ओके, वो बिल्कुल भी उनको परवाह नहीं है कि व्हाट द वर्ल्ड थिंक अबाउट देम. तो दे हैव सेंट अ वेरी क्लियर मैसेज, ओके. ये उनके पॉलिसीज से, उनके डिसीजन से, उनके चॉइस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ये क्लियर हो गया है. मतलब दे हैव सेंट अ मैसेज कि चाहे दुनिया हमारे जो कुछ हमारे बारे में कुछ भी सोचे, we will do whatever we want. So they have really made it pretty clear that what the world think about them, they really don't care about it. They are simply going to do whatever they like. Okay, यही इस पूरे एडिटोरियल में बताया गया है. Now let's check it out. What does this editorial say? Hey Anchal, good morning. Welcome to the class and good to see you after a long time in this class. Okay, chalo guys. So हाँ, so let us start with this editorial. The debate, okay, the debate on whether the Taliban would form an inclusive government, okay, inclusive government representing all sections of Afghan society was laid to rest. Okay, जब तालिबान ने सबसे पहले काबुल के ऊपर कैप्चर किया था एंड एवरीथिंग इन अफगानिस्तान वेंट डाउन टू केओस, पूरी तरह से केओस हुआ अफगानिस्तान में, तब शुरू शुरू में उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारा रिजाइम बहुत अलग होने वाला है, वी आर गोइंग टू फॉर्म एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट. अलग अलग स्टेटमेंट्स आते गए, हम पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, इंक्लूसिव गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे. तो ऐसा एक डिबेट था, ओके, वेदर दे आर गोइंग टू फॉर्म इंक्लूसिव गवर्नमेंट या फिर खुद ही सब कुछ अपनी तरह से ही चलाएंगे. सो दिस वाज लेड टू रेस्ट, मतलब एक बार लेड टू रेस्ट, दिस इज अ फ्रेज गाइस, ओके, ये एक फ्रेज है, लेड टू रेस्ट, मतलब वो डिबेट ही वहां पर खत्म हो गया. ओके, कि तालिबान अब इंक्लूसिव गवर्नमेंट करेगा कि नहीं, विच इज एब्सोल्युटली नॉट इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ही नहीं है. सो दिस वाज लेड टू रेस्ट by the Taliban themselves. तो किसी और ने इस डिबेट को खत्म नहीं किया. It was finished up with the Talibanis themselves on September 7 when the group spokesperson, okay, now there is a static GK here, कि तालिबान के ग्रुप का spokesman, who is the spokesman? It is Zabihullah Mujahid. Okay, Zabihullah Mujahid is the spokesman of the Taliban group. So when he announced the formation of the new administration of the Islamic Emirate of Afghanistan. This is also a static GK guys. Okay, ये भी एक static GK है. You can expect this question in all the three examination. JAT, IIFT, TISS में और CMAT में भी expect कर सकते हो कि what is the new nomenclature of Afghanistan. Okay, पहले क्या था, Republic of Afghanistan था, but now
it has become Islamic Emirate of Afghanistan. Okay, so this can be a question, this can be a possible question in all the three exams, ZAT, IFT and CMAT. Okay, Islamic Emirate of Afghanistan. Now उनका कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑलमोस्ट फॉर्म्ड है. ओके, देयर कैबिनेट मिनिस्ट्री इज डिक्लेयर्ड. हमारे पास भी कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है. वी हैव अ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, three levels of councils of ministers. The topmost levels of the ministers are cabinet ministers, followed by the state ministers, then comes the deputy ministers. So of the 33 cabinet ministers named, तो almost 33 cabinet ministers जो है वो अनाउंस हो कर दिए हैं तालिबान ने. हाय वैभवी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस सेशन. आई होप यू आर डूइंग बेटर नाउ. वैभवी कैसे हो? आई होप यू आर हीलिंग. ओके, अच्छे से रेस्ट करना, अच्छे से दवाई लेना प्लीज. अपना ख्याल रखना वैभवी, बिकॉज दिस इज अ वेरी वल्नरेबल टाइम. दिस इज द टाइम वेयर अपना प्रिपरेशन एकदम पीक पर जाता है. तो नॉट ओनली वैभवी गाइज, इट्स फॉर एवरीबडी. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अपने इम्यूनिटी को काफी अच्छा रखना ताकि एग्जाम के टाइम पर कुछ भी गड़बड़ नहीं हो जाए. ग्रेट ग्रेट, गुड टू हियर वैभवी दैट यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट. ओके, so of the 33 ministers named, 30 are Pashtun. Okay, 33 में से 30 जो है वो Pashtun है. So we can see this is one community. Okay, this is one community which is dominating in the Taliban's cabinet ministry. Two ethnic Tajiks. Okay, this is another ethnic group, that is Tajiks, and one is Uzbek. Okay, one is Uzbek. तो 33 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से क्लियरली है ऑलमोस्ट 95-96% ऑफ द कैबिनेट इट कंसिस्ट ऑफ पाश्तून्स. द तालिबान्स आर प्रीडोमिनेटली पाश्तून्स ओनली. ओके, तालिबानी ग्रुप जो है, तालिबानी इंसर्जेंट्स जो है, दे प्रीडोमिनेटली बिलोंग फ्रॉम द पाश्तून ट्राइब्स. ओके, पाश्तून ट्राइब से ही वो बिलोंग करते हैं, विच मीन्स स्टूडेंट्स. ओके, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स. Now who make up? Okay, predominantly Pashtuns make up 40% of the Afghanistan's ethnical diverse population of 40 million. तो अफगानिस्तान का पॉपुलेशन जो है वो इथनिकली काफी डाइवर्स है. ओके, इट्स वेरी मच डाइवर्स. एंड उसमें से आउट ऑफ द 40 मिलियन, ओके 40 मिलियन मतलब कितना हो गया? 40 नहीं, 4 करोड़ हो गया. ओके, so 4 crore population, almost 40% of their population is Pashtuns only. Pashtuns ही उसको dominate करते हैं. Now in that, okay, in that particularly women and the Hazara Shia minority. So in Afghanistan, women and Hazara Shia, which is also a community, वो भी एक religious minority है. They are into minorities, Hazara Shia, and women are already in minority. Minority मतलब less in number. Both faced targeted harassment and discrimination when Taliban were in power in the 1990s. Okay, तो women है which is also in minority, Hazara Shia minority which is Hazara Shia community वो भी minorities में है, and they face targeted harassment. Okay, उनको जानबूझकर target किया जाता है for their own belief. They have their own reasons for it. Now we will not go into that कि why they are targeted. The reasons are pretty obvious and it is out loud in the open, which is in front of the entire world. So they face targeted harassment and discrimination when the Taliban were in power in 1990. जब तालिबान in the 1996 took over Afghanistan, तभी से उनके ऊपर regularly targeted harassment and discrimination किया जाता है. They were completely excluded. Okay, so ये जो नया कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉर्मेशन है, ओके, द 33 कैबिनेट मिनिस्ट्री, या फिर और आगे भी वो अगर डिक्लेयर करेंगे कैबिनेट मिनिस्ट्रीज को, दे वर कंप्लीटली एक्सक्लूडेड. उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री से बाहर ही रखा गया है. गुंजन, वही ना सर, राइट हैंड में ज्यादा लगी है, कांट इवन होल्ड अ पेन फॉर प्रैक्टिस, इसलिए कल से. Good, good, good. Sir, this data is after Taliban captured Afghanistan. Yes. This is after Taliban captured Afghanistan. However, some of the people who left, जो लोग चले गए हैं, the people who flew, अब उनको consider नहीं किया है इसमें particularly. So
एक चीज तो है कि दे कैप्चर्ड अफगानिस्तान बट दे हैड देयर प्रेजेंस, वो उनका प्रेजेंस पहले से ही था. हाय सुदीप्तो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. ओके, सो दिस इज क्लियर गाइस, यहां से क्लियरली समझ में आता है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जो नोशन था तालिबान का, ओके, विच इज कंप्लीटली फैब्रिकेटेड, विच वाज कंप्लीटली फैब्रिकेटेड, वो पूरी तरह से यहाँ पर डिफीट हो गया है. बिकॉज इन देयर मेन कैबिनेट they have not included women also, and they have not included anybody from the minority, so they were completely excluded from here. 17 ministers, now this is a concerning thing guys, okay, ये एक concerning चीज है कि 17 ministers, okay, 17 ministers are on the UN sanctioned blacklist for टेररिस्ट. ओके, 17 ऐसे मिनिस्टर्स है उनके कैबिनेट में हु आर इन द यूएन सैंक्शन ब्लैकलिस्ट. यूएन का जो टेररिस्ट का लिस्ट है ब्लैकलिस्ट, उसमें 17 लोगों का नाम है, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट मुल्ला हसन अकुंड. ओके, उनका जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, सो हु इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट तालिबान का, यहाँ पर अगेन स्टैटिक जीके, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी द मुल्ला हसन अकुंड एंड सिराजुद्दीन हक्कानी. ओके, सिराजुद्दीन हक्कानी who was the head of the Haqqani network, okay, who is the head of the Haqqani network. Now again in that also Mullah Hibatullah Akhundzada, okay, Mullah Hibatullah Akhundzada, the Taliban's reclusive आमिर. ओके, तालिबान reclusive आमिर, reclusive का मतलब होता है solitary, to avoid any kind of company या फिर to avoid any type of partnership. ये ये एक टाइटल है, दिस इज अ टाइटल. आमिर का मतलब होता है पर्टिकुलरली इट्स अ टाइटल अमंग द मुस्लिम रीडर्स. सो मुल्ला हिबातुल्ला अखुंडजादा is going to be the Taliban's reclusive Amir, will be the Amir ul Mominin. Okay, ये एक another title है, which is another title in the Talibani regime, that is Amir ul Momin, which means, okay, जिसका मतलब है commander of the faithful. Okay, जो commander of the faithful is the meaning of this new title, Amir ul Mominin. A title, okay, a title Mullah Omar had assumed in the 1990s. Okay, 1990s में जो ये टाइटल था, that is Amir ul Mominin, वो किसके पास था? It was to मुल्ला उमर. Okay, मुल्ला उमर के पास ये टाइटल था. With the cabinet portfolios allocated to the Taliban's core and the Haqqanis. Okay, तो ये sir, very complicated name. How can we remember this name? Write it down Sudipto. Easy है, एक बार लिखोगे इसको, दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा. Okay, so this complicated names, I really understand these are complicated names, but you just have to note it down. उसको नोट डाउन करो, 3-4 बार उसका नाम प्रैक्टिस करो किसी एक क्वेश्चन में, you will remember it. Okay, हमेशा याद रखो guys, revision is the key. Okay, revision key है, अगर रिवाइज नहीं किया तो फिर you cannot remember. Alright, so with the cabinet's portfolio allocated to the Taliban's core and the Haqqanis, and introducing a system that resembles the previous Islamic emirates, known for its disregard for basic human rights. तो पहला जो इस्लामिक एमिरेट था इन द स्टेट ऑफ अफगानिस्तान इन द ईयर 1990, इट वाज डिसरिगार्डेड. ओके, क्योंकि बेसिक ह्यूमन राइट्स वहां पर लोगों को गारंटीड नहीं किए थे. ओके, नो ह्यूमन राइट्स वर गारंटीड to the people of Afghanistan in the year 1990s. The Taliban have sent a clear message that they care little about what the world thinks about them. अभी भी जब उनका regime वापस आया है, when their regime is back in Afghanistan, by not giving any kind of human rights to its citizens or to the subject of the state, they have sent a very clear message out there that they really don't care about what the world thinks about them. Okay, so this is the first part. ये पहला पार्ट है. Should we go ahead guys? Second part करें? Is this clear with everybody? ये पार्ट सब लोगों को क्लियर है? Is this part clear with everybody?
Hi Ami, good morning. Welcome to the class. Great. चल अब टाइम टू कंक्लूड दिस एडिटोरियल. ओके, इस एडिटोरियल को कंक्लूड करते हैं. नाउ today's Taliban, okay, today's Taliban appears to be stronger than the last avatar. Okay, 1990s में जो तालिबान था और आज के तालिबान में बहुत डिफरेंस है. Why? Because today's Taliban looks stronger. अवतार मतलब particularly their appearance. Okay, उस समय पर जो उनका appearance था और आज उनका जो appearance है, there's a huge difference between last time Taliban in the 1990s and today's Taliban. In why? Because in the 1990s, okay, in the 1990s, only three countries recognized the Islamic Emirate. Okay, 1990s में सिर्फ तीन कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया था इस्लामिक एमिरेट्स को. द तालिबान ऑल्सो नेवर कंट्रोल द होल ऑफ अफगानिस्तान. इन 1990s में भले ही तीन कंट्रीज ने उनको रिकॉग्नाइज किया था, बट उनका देवर नॉट सो पावरफुल. ओके, उस समय पर वो उतने पावरफुल भी नहीं थे कि देवर कंट्रोलिंग द एंटायर ऑफ अफगानिस्तान. वो पूरी तरह से अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर रहे थे तब. बट नाउ, ओके, आज अगर आप लोग देखोगे, बट नाउ more regional powers, okay, but now more regional powers are ready to engage with them, including China and Russia. Okay, तो अफगानिस्तान के जो आजू बाजू के जो देश है, now they are particularly there are regional powers who are ready to cooperate with them. Okay, वो उनके साथ cooperate करने के लिए ready है, which includes super powers like China and Russia. The group, okay, the group has also claimed total control over the country. So in 1990s they did not have total control, but today they have the total control of the entire country. With Panjshir, okay, with Panjshir, the last holdout, Panjshir ka last holdout tha, that is also now in the control of the Talibanis. Over and earlier this week, Panjshir bhi jo hai, abhi now it is captured by the Taliban and it was done in the last week. With the new government, okay, with the new government, a stronger Taliban are trying to tighten their grip, though it may not be easy. Okay, so Taliban, जैसे ही they have taken control, they are trying to tighten their grip. मतलब they are trying really hard to control the entire territory. Ever since Afghanistan became a republic in 1973, तो अफगानिस्तान जो है रिपब्लिक बना था 1973 में. No government in Kabul has managed to stabilize this country. भले ही 1973 में वो रिपब्लिक बना था, no government in the entire टाइम फ्रेम, ओके, पूरे रिजाइम में किसी भी गवर्नमेंट को एक स्टेबल गवर्नमेंट बना ही नहीं पाए थे. Because of the ethnic, the religious, and the political contradictions are too deep to be glossed over by the Talibanese divisive Islamist Pashtun nationalism. Okay, तो तालिबान का जो इथनिसिटी है, रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शन जो है within these three spheres of Afghanistan, ये इतने engrossed है, they are too deeply engrossed in the Afghanistan people कि तालिबान का डिविसिव इस्लामिस्ट पाश्तून नेशनलिज्म जो है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा. दैट इज व्हाई they are facing it difficult to tighten their grip. In Panjshir, the rebels may have withdrawn to the mountains. Okay, Panjshir के जो rebels है, they have withdrawn to the mountains. Okay, they went to the mountains. Ultimately, they had to retreat because the Talibanis are more powerful than ever before, like the Taliban did in 2001. तो जैसे ही अमेरिका ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान के ऊपर and the Talibanis they withdrew themselves into the mountain, उसी तरह पंजशीर के जो rebels है they also withdrew themselves to the mountains. But they could, okay, but they could regroup and hit back like the Taliban did after 2005. So probably the rebels have now understood that we are at a vulnerable position. We are not stronger like Talibanis, but they can withdraw to the mountains, probably get help from their alliances. उनके alliances वो help लेकर they can constitute themselves into a stronger group and come back
exactly like Taliban did in the year 2005. 2001 में उनको पता चला कि we have no chance to stand against USA because USA is very powerful. So they withdrew themselves into the mountain. 4 years they regrouped themselves. Okay, 4 साल उन्होंने अपने आप को regroup करने में लगा दिया and ultimately they bounced back in 2005. The total exclusion of Shias and marginalization of other ethnicities could blow back in the near term. Okay, तो अफगानिस्तान का जो गवर्नमेंट है, जो अल्टीमेट कैबिनेट है, उसमें शियाज का टोटल एक्सक्लूजन है और मार्जिनल एथनिसिटी जो है which are present in the Afghanistan, ultimately their exclusion can blow back in the near term. So there is going to be a small pushback for the Talibani government since they have excluded the Shias and the marginal ethnicities in their country. Afghanistan has also seen the Taliban's rule of the mullahs quietly. Taliban has also seen the emergence of vibrant civil societies. Okay, so even though Taliban has taken their control from 15th of August, it's not that easy. Na, ki people have accepted them. No, there are vibrant civil societies who are protesting against them, especially in the major cities. Okay, major cities में अलग अलग अभी भी protest चल ही रहे हैं, which have not accepted the Taliban's rules of the mullahs quietly. So they have not quietly accepted the Taliban's rule yet. They are protesting. Okay, वो protest कर रहे हैं and particularly it is in the larger cities. बड़े cities में ये protest चल रहा है. Already the crackdown on women's right have sparked large scale protest by women in Kabul. Okay, तो last week से ये चल रहा है कि women जिनको rights नहीं दिए गए हैं, they are saying now the Talibanis have particular code related to women in the country, so which are not accepted by the women. Okay, generally women वो accept नहीं कर रहे हैं. They are launching large scale protest in Kabul and elsewhere, wherever it is possible, which was unimaginable in the 1990s. Okay, 1990s में probably the women were not so aware of their rights or they were not so conscious about their rights. But today, since they are educated, since they are aware about their rights, the women are protesting for their own rights in order to exist in the country. और ये possible नहीं होता 1990s में. If the Taliban were wise, they would have focused on healing the wounds of the long war and rebuilding the ruptured. Okay, ruptured का मतलब होता है sudden break or burst. Okay, sudden break or burst is what is meant by rupture. तो तालिबानी जो है, they had an opportunity to heal the wounds of the war. Okay, now that they have taken control over Afghanistan, probably they could have implemented this thing or this regime in a very different way, rebuilding the ruptured state and society. Ruptured matlab kya? Already damaged society hai. Afghanistan has never been peaceful. Okay, there has always been some kind of activities, some kind of terrorist activities. So there is no peace in Afghanistan's society. Okay, state and society. So ये तालिबान के पास एक opportunity था to repair the damage which was done to their state and society because of the war with America in the last 20 years. But the Pashtuns, Islamist, sectarian Taliban seem programmatically incapable of doing that. Okay, तो तालिबान के जो लोग हैं, ultimately we could see they are incapable of doing that. There are multiple reasons for it. Why the Talibanis are not doing? Probably this is the arrogance of power that they think that they cannot be taken down now. So probably they are doing it in an aggressive and haphazard way, which is someday going to burst out into a major civil war and might result into taking down the Talibanis in the state also. Okay, so this is the entire editorial written of the mullahs. Clear है सब लोगों को? Everybody clear of this thing? ये सब लोगों को clear है guys?
Is this clear? I have framed some vocabulary based questions for you guys. Should we have a look on them? Okay, कुछ vocabulary based questions मैंने रखे हैं आपके लिए. Let's have a look on them, guys. Okay, this is the word that we came across today. आज ज़्यादा words नहीं थे, only one word. Rest all the words were normal. Break or burst suddenly. Okay, break or burst suddenly is the meaning of this word. Rupture. Okay. Also guys, do check out MBA 2021 mock marathon test. इसमें आपको 2 full length mocks for CAT per week मिलेंगे, 3 sectional test LRDI QA VARC per week, 2 full length mock test for OMEDs per month, and detailed video analysis of all mocks and sectional tests. It is now available in Plus and Iconic subscription, guys. Okay, and this is the best pick for your preparation. That is the 6 months of Iconic subscription that you can get it for 25,800 rupees. So whenever you go for the subscription, guys, just use this code RUSHI. That will give you an additional 10% discount on all your subscriptions. सारे subscriptions पर आपको 10% discount मिल जाएगा. Okay, चलो क्वेश्चंस मैंने 5 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस रखे हैं, नॉट रिलेटेड टू द एडिटोरियल. ओके, एडिटोरियल के रिलेटेड नहीं है. दिस आर नॉर्मल वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, गो फॉर इट. फ्लीटिंग, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. फ्लीटिंग, select the most appropriate synonym of the given word. Fleeting. Gunjan said A, Praveen said A. And that's a correct answer. Transient. Okay, transient is the correct answer. Fleeting का मतलब होता है lasting for a short time. Okay, fleeting means lasting for a short time. So transient का मतलब होता है normal time, मतलब temporary होता है. Transparent is not related to the word. Tranquil is also not related. Tranquil का मतलब होता है calm या फिर peaceful. ओके, काम या फिर पीसफुल. एंड टेपिड का मतलब होता है ल्यूक वार्म, स्लाइटली वार्म. Slightly warm is the correct answer. Is what is the meaning of the word tepid. So the correct answer is transient, temporary change. Okay, which means temporary change. Okay, next, select the most appropriate synonym of the given word. Select the most appropriate synonym of the given word. Guil, guil. Come on, guys. What is the most appropriate synonym of this given word? C, 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 C. And that is a correct answer, guys. That is a correct answer. Guile का मतलब होता है cunning intelligence. Okay. Cunning intelligence. So, chicanery. Okay, chicanery is the correct answer, which means deception. Okay, deception of someone or something to achieve the objective. Honest, hot, charming, these are not the correct answers. Okay, guile is cunning intelligence, chicanery is deception to achieve one's objective. Okay, next,
The most appropriate antonym of the given word. The most appropriate antonym of the given word. The most appropriate antonym of the given word. Antonym of the given word. Unholy. Okay, unholy का मतलब क्या होता है? Which is sinful. Okay, which is sinful. Pity, impious, wave. These are not the correct answer. Venerate. Okay, venerate is the correct answer for this question because venerate का मतलब होता है great respect. Okay, treat with great respect or regard. Okay, or regard. Yes, impious can be synonym. Pity. Okay, pity is feeling of sorrow. Pittiness is feeling of sorrow. Okay, impious is disrespectful. पेव का मतलब होता है कवर द पाथ. पेव का मतलब होता है कवर द पाथ. So correct answer is venerate. Treat with great respect or regard. That is the correct answer. Next, meaning of feel blue. Meaning of feel blue. Meaning of feel blue. Meaning of feel blue. फीलिंग एस्थेटिक. एस्थेटिक का मतलब होता है enthusiasm. Enthusiasm. Feeling aesthetic. Feel blue is troubled or depressed. Okay, troubled or depressed is the meaning of the word feel blue. Easy achievement? No. Feel blue is troubled, basically depressed. When you are down with fever, or if you are down with something, if you are not keeping well, if you are not ill, you feel blue, right? आप blue हो जाते हो. So that is what is the meaning. In trouble or depressed. Okay. Last question. Last question. Meaning of flies off at a tangent. Flies off at a tangent. Meaning of flies off at a tangent. Yes, huh? Because you are not well, Vaibhavi, so you are feeling blue. Meaning of flies off at a tangent. Yes, and that is a correct answer, all of you. ये बिल्कुल सही जवाब है. Start discussing something irrelevant.
Okay, start discussing something irrelevant. Flies off of a tangent. So generally, in a group discussion, the student flies off at the tangent. Okay, हर एक ग्रुप डिस्कशन में एक ऐसा पार्टिसिपेंट होता ही है जो कुछ भी irrelevant बोलेगा, which is not related to the topic. So he flies off the tangent. Okay, so start discussing something irrelevant is the meaning of this phrase, idiom. Start discussing something irrelevant. Okay, chalo guys, that is all from my side for this session. किसी को कुछ डाउट है? केबीसी से केबीबी से शुरू हो रहा है जीडी, कब से? तुम लोग बोलो, शुरू करते हैं जब से अपन, आई डोंट माइंड. ओके, चलो. एनी डाउट इन दिस सेशन गाइस? इस सेशन में किसी को कुछ डाउट है? सर जैन का करंट अफेयर्स का टेस्ट हो गया? नहीं गुंजन, वी विल हैव इट इन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में करेंगे. ओके, chalo guys, so before we part ways, let me tell you about the special classes guys. Special classes are all free classes on the Unacademy learning platform. You don't have to pay any subscription money for that. You just have to take out the time to attain the live interactive sessions by top educators of this country. You will have polls for the learners. We also have raise a hand feature. You will never miss a class and get notified about all the upcoming sessions, courses and recommendations curated just for you. You can download the lecture notes from the application itself with and without annotation. And the best thing is you can watch your sessions anytime, anywhere from any of your devices, guys. Okay. Sir, shuffle करके monthly test हो रहे हैं. Yes, Gunjan, we are shuffling it. We are not doing it month wise. Okay. So you guys can join me from Monday to Saturday at 5 p.m. guys for the TISNET 2022 daily GK update and quiz session. Let me remind you once again guys, special classes are all free classes on the Unacademy learning platform. आपको बस Unacademy का learning application download करना है and you have to use this code RUSHI whenever you go for the registration. Okay, जब भी आप register करोगे, use this code RUSHI ताकि आपको आप मेरे सारे फ्री सेशंस को अनलिमिटेडली देख सको. ओके, यू कैन वॉच ऑल माय फ्री सेशन अनलिमिटेडली ऑन द अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म. ओके, ऑल्सो गाइज अनअकैडमी कॉम्बैट को रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर दो. इट इज इंडिया बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर कैट एस्पिरेंट्स एंड यू कैन एनरोल फॉर एब्सोल्युटली फ्री. ओके, आप बिल्कुल फ्री में एनरोल कर सकते हो. just use this QR code. Okay, QR code को use करो and this is your invite code for registering combat, that is RUSHI. every Sunday 12 बजे combat होता है guys and you can win from a pool of 55 lakhs. Okay, scholarship आप 55 lakhs के pool से जीत सकते हो. You can even win 1 year cat plus subscription for absolutely free. Okay, बिल्कुल free आप 1 साल का कैट प्लस सब्सक्रिप्शन जीत सकते हो इफ यू कम फ्रॉम रैंक 1 to 3 इन दिस कॉम्बैट scholarship test. Also check out the CAT Iconic one-on-one live mentorship program guys. You can speak with the mentor directly, you can clear a doubt, you can discuss concept, discuss exam strategy, build a customized study plan, book slot as per your convenience. Okay, so go for the subscription guys. The 1 year subscription plan goes for 39,500 for Iconic and 22,554 plus. और जो लोग कैट 2022 को टारगेट करेंगे, you guys should go for the 2 year subscription plan that goes for 32,800 rupees for plus and 59,999 for 2 years of Iconic. And do not forget to use this code RUSHI. That will give you an additional 10% discount on all your subscription guys. Thank you all for joining me for this session. You guys were absolutely amazing. I will see you at 12:30 for the weekly GK test on the Unacademy learning application. Till then you guys take care. Let's crack it. Bye bye guys.